Hello students, good morning to all of you. Now I am again with you with the important topic of management accounting of unit 3rd. The topic is sunk cost, relevant cost and irrelevant cost. So today I am going to discuss with you the relevant cost and irrelevant cost. Basically sunk cost I discussed in my previous lecture with you. So this is the part 2 of this particular session. So basically, relevant cost is a managerial accounting term and that describe avoidable costs that are incurred only when making a specific business decision. तो बेसिकली रिलेवेंट कोट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि जब ही हम इसको स्पेसिफिकली अब बिजनेस डिसीजंस जब हम लेते होते हैं तो उस समय इस कॉस्ट को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट इज यूज टू एलिमिनेट द अननेसेसरी डेटा. तो जो बेसिकली इसका जो मेन कंसेप्ट है वो अननेसेसरी डेटा को जो है एलिमिनेट करने का जो काम है वो मेन है एंड दैट कुड कॉम्प्लिकेटेड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. एज एन एग्जांपल, like irrelevant relevant cost is used to determine whether to sell की और keep a business units. क्या इन्हें बेचना है या हमें इसको बनाए रखना है, तो ये देखना पड़ेगा. तो मेक और बाय डिसीजन हो सकता है. और जो रिलेवेंट कॉस्ट है कि इसमें क्या हमारा उसमें खर्चे आ रहे हैं. ऑपोजिट ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट इज सunk cost. Sunk cost बेसिकली हमने आपको बताया कि इस तरह का कोई रिलेवेंट नहीं है, डिसीजन मेकिंग में इसका कोई रिलेवेंस नहीं होता है, इसलिए इसको sunk cost कहा जाता है. एंड विच हैज बीन इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ आउटकम्स ऑफ करंट डिसीजंस एक्सेट्रा. अगर हम मेन पॉइंट्स की बात करें, की पॉइंट्स ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट, तो रिलेवेंस कॉस्ट आर ओनली द कॉस्ट दैट विल अफेक्टेड बाय द स्पेसिफिक मैनेजमेंट डिसीजन. तो रिलेवेंट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो बेसिकली आपकी जो है मैनेजमेंट स्पेसिफिक मैनेजमेंट डिसीजंस में अफेक्टेड होती है एंड दैट विल बी कंसिडर्ड. अपोजिट ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट इज अ सunk cost. ये भी आपको ध्यान रखना पड़ा है. मैनेजमेंट यूजेस रिलेवेंट कॉस्ट इन डिसीजन मेकिंग एंड such as whether to close a business units or whether to make or buy or the goods and services, whether to accept or reject the last minutes of special orders. So that kind of decision are taken by in the relevant cost and different things. एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके. तो बेसिकली रिलेवेंट कॉस्ट इज लाइक फ्यूचर कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्सपेंसेस विच विल बी इनकर्ड इन फ्यूचर्स दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए रिलेवेंट कॉस्ट. सेकंड वन इज अवॉइडेबल कॉस्ट. Avoidable cost and that only the cost which can be avoided in certain decisions, that is known as avoidable cost. And opportunity cost, cash inflows which would have to be sacrificed. So that is known as the opportunity cost that would be sacrificed by the particular person. Incremental cost, only the incremental or differential cost related to the differential alternative are known as incremental cost. So these are the some examples of relevant cost. Types of relevant cost की अगर हम बात करें तो types of relevant cost decisions में इसमें जो है आपके different terms जो है अगर हम देखें, लाइक द फर्स्ट वन इज कंटिन्यू ऑपरेटिंग वर्सेस क्लोजिंग बिजनेस डिसीजंस हमारे होते हैं. तो इस तरह के डिसीजंस में हम इसको यूज कर सकते हैं. एक डिसीजन फॉर मैनेजर इज वेदर टू क्लोज अ बिजनेस और यूनिट और कंटिन्यू टू ऑपरेट it and relevant costs are on the basis of these. Then the assume that like the example of a chain of retail sporting goods stores in considering closing and a group of stores catering to the outdoors sports market, etc. The relevant costs are the costs that can be eliminated due to the closures and as well as revenue lost and when stores are closed. So if the cost of to be eliminated are greater than the revenue cost, the outdoor cost stores should be closed. तो ये आपको ध्यान रखना होगा. तो बेसिकली कंटिन्यू ऑपरेटिंग या क्लोजिंग बिजनेस यूनिट्स से जब हम करते हैं तो उस समय आपके रिलेवेंट कॉस्ट डिसीजन जो है इंपॉर्टेंट रोल होते हैं. मेक और बाय डिसीजंस में भी आपका रिलेवेंट कॉस्ट डिसीजंस काफी इफेक्टिव होते हैं. तो व्हेन मेक और बाय डिसीजंस आर ऑफन एन इश्यूज फॉर अ कंपनी एंड दैट रिक्वायर्स द कंपोनेंट पार्ट्स to create a finished product. For example, a furniture manufacturer is considered considering an outside vendors to assemble and stain wood cabinet, and which would then be finished in house and adding the handles and other details. So relevant cost that in this particular decision are variable cost. तो इस मेक और बाय में वेरिएबल कॉस्ट जो है इसमें यहाँ पर आपका जो है रिलेवेंट कॉस्ट आ जाती है एंड इनकर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर and make the wood cabinet and
price paid to the outside vendors. If the vendors can provide the components, parts to low cost and other things. Then factoring in a special orders की हम बात करें, special order occurs when a customer place in order and near the end of months and sales and have already covered and fixed cost of production for a month. If a client wants a price quote and for a specific order, management only consider the variables and cost to produce a good, specifically materials and labor, fixed and such etc. So factories lease and manager salaries are the irrelevant because they have been already paid for the particular things. Then now moves to the irrelevant cost. So irrelevant cost basically are the cost either positive or negative that would be affected by the management decisions. ठीक है, तो इरेलेवेंट कॉस्ट जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एंड इट वुड बी अफेक्टेड, इट वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द मैनेजमेंट डिसीजन. ये आप देखेंगे कि ये मैनेजमेंट डिसीजंस में किसका कोई रोल नहीं होता, कोई इफेक्ट मतलब रोल तो होता है बट नॉट अफेक्टेड, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो रिलेवेंट कॉस्ट सच एज ओवरहेड एंड शंक कॉस्ट आर इरेलेवेंट कॉस्ट एंड देयरफॉर इग्नोर्ड व्हेन द डिसीजंस आर मेड. ये भी ध्यान रखना है कि जब हम इग्नोर कर देते हैं, जब इनको मेड डिसीजंस वगैरह हम लेते हैं, और इट इज क्रिटिकल फॉर अ मैनेजर टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश एन इररिलेवेंट कॉस्ट in order to potentially save the business and etc. So they are the main points, key points of the business relevant cost. Irrelevant costs are costs that would not be affected by managerial decision. ये आपको ध्यान रखना है. Relevant costs are costs that will be affected by the manager. ये दोनों में डिफरेंस भी हम यहाँ देख सकते हैं कि relevant cost में जो है डिसीजंस जो है इफेक्टेड नहीं होते हैं, और relevant cost में जो है आपके इफेक्टेड होते हैं. Irrelevant costs are those that will not change in the future when make and one decision versus another decision. The examples of relevant cost are sunk cost, committed cost, overhead cost, etc. are the that cannot be avoided by the decisions, and so there is a no correct answer for each business, and it will often be as per situation. So these are the some examples of irrelevant cost. So basically, irrelevant cost, classifying cost as either irrelevant or relevant in useful manager for making decisions. तो irrelevant cost को भी हम देख सकते हैं, define कर सकते हैं. Sometimes it is affected the decision, but about the profitability of different alternatives. Costs that stay the same regardless of which alternative is chosen are irrelevant and for decision making being paid. So because an irrelevant cost may be relevant cost and at a different management decision, कई बार ऐसा देखा गया है कि irrelevant cost भी relevant cost बन जाती है कई decisions में, and it is important to formally define and document cost, and that should be excluded from the considered and which reach and etc. And it is helpful to understand the difference between the relevant cost and an irrelevant cost to make critical decisions. So these costs are either make or your company and more profitable and or but the company unders. So these small decisions are very crucial day to day business, and here are the some examples. Like अगर हम shutting down करें specific decision within the business, shutting down एक specific business होता है, accepting orders or higher price, out sourcing a product and make it in house and selling a half in product, etc. Then examples of irrelevant cost की अगर हम बात करें तो basically the sunk cost expenditure which have already been incurred, it is known as a sunk cost, and it is an example of a relevant cost. Committed cost, future cost which cannot be altered, ऐसी cost जिसको altered नहीं किया जा सकता. Non cash expenses, depreciation and amortization are the non cash expenses, जिनका non cash expenses हो ये भी हमारे irrelevant हो जाते हैं कई बार. Overheads हो गए, general and administrative overheads also known as the irrelevant cost. So these are the some types अगर हम बात करें then examples. Then relevant cost versus irrelevant cost की हम बात करें तो relevant cost is any cost that will be different among the various alternatives, and there is a seldom a one size fit all situation for relevant or the irrelevant cost. ठीक है, तो ये हम इसको कह सकते हैं there is a why this is why that they are often called differential costing. इसीलिए हम इसको differential costing कहते हैं, and because the difference is between the both relevant and irrelevant cost, and they are affected the situation according to the situation of working. So they different among the different alternatives. तो हर एक situation में अलग अलग तरह की situation आती है, तो इसलिए इसको रखा जाता है.
So thank you very much. I hope you understand all these things, and